Hello student, welcome to Easy Learning. I hope you all are fine and doing good at your place. Student, we're going to study today about the MBA 4th semester from Specialization Information Technology. So here we're going to just study about the cloud computing for the business, and we're going to cover up the unit 1, the introduction of a cloud computing. Let's start. So here we're going to study about the cloud computing. Students, we all know, every student, those who are using the mobile or smartphone, they all know about the cloud computing. Cloud computing is nothing, it's just, the place where we can store our data that we are using in a form of an image or a video or any document, anything. So these data we're storing in a certain place that we call that a server. So with the help of internet, we are storing those data. Like if we are clicking a picture or any image we are taking on the mobile from the mobile phone. So you also know that those photos we're storing at certain place. Okay, that place is exactly is a cloud where the bulk of data we're storing in a place. Student, you all know that Google is providing facility of a data storage, a large or bulk. That is actually a cloud computing. Like if you are clicking a picture here, you can see a message that come that your image is stored at the Google image is being stored certain place. The place where the data, that image is actually storing is cloud, where the large number of anyone is just clicking a picture. There's a lot of people were clicking a picture or taking a videos at the same time or so many places. So those data we're storing at the certain place, that is actually a cloud. It's very easy, just understand what the funda is just going here. So let's come to the point that the term cloud refers to the network or a internet. Okay, so when we just talk about the cloud, first thing just in our mind that the cloud is nothing, it's just a network or in a form of internet. It is a technology that uses the remote server on the internet to store or manage and access the data online rather than local drive. So here is what happened. We have a remote server which is with the help of internet we are able to store, manage or access data to which is in a form of initially what in normal phones that we click the picture, it goes and saved in a certain drive that have a certain amount of space in that. So rather than saving our those images or videos, here we are getting a online or internet. Through the with the help of internet we can store our photos or videos on any kind of a document. So which is in a form of remote server. Okay, so here is the internet. This is very important because with the help of the internet only we can store our data with at a a certain drive or a remote server. So now the data can be in a anything such as a file or image or document, audio, video and more. So as I already told you, here is the data that has been stored. So what are the data? Data are actually the any sort of a file or an image in a form of documents or any recorded audio, any recorded video and many more. Then there are the following operations that we can do using a cloud computing. So the first one is developing a new applications and the services. So with the help of cloud computing, we can develop a
new application and the service. The developing a new application, the application in a form of like e-commerce, like we have Amazon, a Flipkart, or any sort of application that you can see on internet. Even we have many more, gaming sites are there. There are many, image editor sites are there. So there's a many applications in any form that has been nowadays are developing uh, new application with the help of the cloud computing, and they were storing their data and every kind of information at the cloud. Then we have a storage, backup, and recovery of data. As I already told you that we have images in a form that are data in a form of images, videos, or any sort of. We can store that. Later, if we want to fetch that stored data again, that we can recover it from there. And also we can anyhow, if the data is image is a delete from your mobile phone, but it is saved at the Google. So later on in a future also, you can able to you know um, take your image back. You can see your image back. Then one more thing I want just to tell you, student, like we all know that nowadays what is happening, like you can see that many when you can see in the morning you get a notification from the Google that you got some form of images in a form of collage or a videos recommendation or like that. These are is happening with the help of the already that image is already stored at the cloud. So later on, with the help of the Google, they fetch those data and making it very that like the user that one is using those images can later on can see in a form of collage or reviving old memories kind of notification is coming. So these are possible because of cloud computing. Then we having a hosting of blogs and the websites, then the delivery of software on the demand, then analysis of data, streaming of videos and the audios. These are happening actually all because of cloud computing. So cloud computing is very important nowadays in any field, any kind of applications that are running today, and people are liking it also because you can easily store and you can later on you can recover those data also. You don't need a drive, and there's no issues like we have a certain space. The cloud is actually providing a huge amount of space to store the data. So why cloud computing? So small as well as a large IT companies follows the traditional method to provide the IT infrastructure. That means for any IT company we need a server room. That is the basic need of any IT companies. तो जो हमारे छोटे या बड़े कोई भी किसी भी तरह का जो हमारे IT कंपनीज होते हैं, वो बेसिकली क्या है कि they were using a traditional method to provide a IT infrastructure. इसका मतलब ये है कि जो आईटी कंपनीज है दे नीड अ सर्वर रूम, वो प्रॉपर सर्वर रूम. ठीक है. तो अब लेट्स सी व्हाट इज इन सर्वर रूम एक्चुअली. तो इन अ सर्वर रूम देयर शुड बी अ डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर, नेटवर्किंग, फायरवॉल्स, राउटर्स, मोडेम्स, स्विचेस, क्यूपीएस जो कि है क्वेरी पर सेकंड, मीन्स दैट हाउ मच क्वेरीज और लोड will be handled by the server, the configurable system, high net speed, and the maintenance engineer. तो स्टूडेंट हमारे जो सर्वर रूम होता है ऐसे नहीं कि इट नीडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इनसाइड. इसमें क्या है, डेटाबेस सर्वर है, हमारा मेल सर्वर है, और एक नेटवर्किंग है, आपका फायरवॉल हो गया, आपके राउटर्स लगे हुए हैं फॉर द इंटरनेट सिस्टम, मोडेम्स भी फॉर द इंटरनेट सिस्टम्स, फॉर स्विचेस आर देयर. हमारे किसी क्वेरी पर सेकेंड मीन्स दैट जब हम हाउ मच क्वेरीज और
load that will handled by the server. Configurable system है हमारे high speed इंटरनेट सिस्टम है एंड मेंटेनेंस इंजीनियर। ये जो सारी सिस्टम्स हैं दे वर कनेक्टेड ईच अदर्स, और इसमें वायरिंग सिस्टम्स भी होते हैं, एक से एक सिस्टम एक दूसरे कनेक्टेड है थ्रू द वायर ऑल्सो। ठीक है, तो ये बहुत ही ह्यूज सिस्टम स्टैब्लिश होता है एक सर्वर रूम के अंदर। और अभी कंपनीज में क्या होता है, देयर आर bulk of projects are running at the same time, so they needed all these kind of setup for any IT companies. Now to establish a such IT infrastructure we need to spend a lot of money. To overcome all these problems and to reduce the IT infrastructure cost, the cloud computing comes into existence. तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे मतलब खर्च करने, क्योंकि इसमें इतने सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, इन सभी को खरीदने के लिए वी नीडेड स्पेंड द सो मैनी अमाउंट ऑन दैट, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, उनको मेंटेन मतलब यू हैव टू मेंटेन दोज सिस्टम्स ऑल्सो। तो इन सब तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे जो लग रहा है इसे भी रिड्यूस करने के लिए हम क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग started come into existence. So student, in this picture you can see two pictures are mentioned here. First is the before cloud computing is actually a server room जहाँ पे हर तरह के जो आपके सिस्टम है उसको हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, और दूसरा जो है हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल स्टोरेज सिस्टम है जो कि डेटाबेस सिस्टम है। आपके जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपका सर्वर है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी रिलायबल टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग a proper cloud computing to the any IT companies. और आप देख सकते हैं बिफोर यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले जो हमारा सर्वर रूम जो यूज़ होता है in any IT companies, you can check like each and every there are so many systems are established here, बहुत सारे कनेक्टिविटी है। तो ये जो कनेक्टिविटी कैन any kind of problems or issues are created in this. तो इस तरह के जो इश्यूज को ओवरकम करने के लिए द कंपनी हैव स्टार्टेड यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग। द advantage of a cloud computing. So first is the backup and restore data. Once a data is stored in cloud, it's easier to get backup and restore that data using the cloud. सबसे पहला हमारा यही है कि एक तरह का बैकअप प्रोवाइड करता है, आप जो भी डेटा आप क्लाउड में स्टोर कर रहे हो, और इसे रिस्टोर भी करता है। यानी इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू जस्ट जो डेटा आपने स्टोर किया है और इन फ्यूचर यू वांट टू सी द सेम डेटा, तो यू एबल टू fetch that data from wherever the data is being stored. ठीक है, आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं by using the cloud. दूसरा है improved collaboration. The cloud application improve collaboration by allowing group of people quickly and easily share information in the cloud by share storage. क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ये भी है कि आप जो भी अपना डेटा है यू कैन आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा गूगल शेयर हम करते हैं। कई बार क्या होता है हमारा हम स्टोरेज एक जगह अपना क्या कहते हैं डेटा को हमने स्टोर कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लिंक जो है अगर हम चाहते हैं कि वो डेटा यानी प्रॉपर साइज़ जो भी इसका प्रॉपर साइज़ है वो सेम साइज़ पे वो डेटा हमारा कोई हमारे फ्रेंड है या हमारे रिलेटिव्स हैं वो देख सकें। हमने कोई फ़ोटो क्लिक किया, हमारे पास इमेज का एक प्रॉपर हमारा एक सेट है और हमने उसे एक जगह स्टोर कर दिया है, तो वी कैन जस्ट प्रोवाइड अ लिंक टू द our relatives or our friends so that they can easily go to that link and can see the image from there. तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का improved collaboration प्रोवाइड कर रहा है और आप easily जो डेटा मतलब कोई दूसरा भी अगर आप चाहते हैं, इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल ऑल्सो, ऐसा नहीं कि हर इंसान ये इस तरह का डेटा देख सकता है। द वन यू विल शेयर द लिंक, ठीक है।
Now, the second one is the excellent accessibility. The cloud allows us to quickly and easily access store information anywhere, anytime in whole world using the internet connection. An internet cloud infrastructure increase organization productively and efficient by ensuring that our data is always accessible. तो हमारा जो क्लाउड में हमने जो भी डेटा हमने स्टोर किया हुआ है in a form of anything like image, document, video, audio, any sort of that can be easily accessible. आप उसको easily आप उसको access कर सकते हो यानी देख सकते हो कहीं पे भी even in a anywhere whether you can get the internet connection. ये भी है कि जैसे कहा जाता है आप पहाड़ों में मसूरी में अगर आप घूमने गए हो और आपको कोई डेटा आपको एक्सेस करना है अगर वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है तो यू कैन ईजली यू नो able to access those data anywhere, not only in India. If you're going to some other country, so you can access those data there also. Now the fourth one is the low maintenance cost. So low computing reduce both hardware and the cloud computing reduce both hardware and the software maintenance cost for the organizations. Cloud computing because it reduce the both hardware and software maintenance cost क्योंकि ये मतलब it doesn't need it in a proper room or something like to store the data. ये ऑलरेडी आप बस आपके पास क्या है कि यू जस्ट नीडेड अ इंटरनेट सिस्टम सो दैट यू कैन जस्ट एक्सेस और यू कैन स्टोर योर डेटा देयर. तो इसके लिए यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड. यू जस्ट जो भी आप इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो यू नीड दैट ऑन दैट टाइम. ओके. Now, the other advantages of the cloud computing, then we have a mobility. The cloud computing allow us to easily access all cloud data via mobile. यानी आप जो भी अपने डेटा को मोबाइल पे मतलब स्टोर कर रहे हो आप देख सकते हो कि आपको मतलब आज आपने कोई पिक क्लिक की है और आप आज के मतलब 1-2 साल भी यू कैन क्योंकि वो क्लाउड में स्टोर हो गया है तो यू कैन ईजली सी दोज डेटा मतलब अपना इमेज यू कैन सी आफ्टर 2 years ऑल्सो और 3 years और जब तक वो डेटा आपका स्टोर्ड है. तो हमारा गूगल इमेज इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. नाउ डेज यू कैन सी दैट आपने जो फोटोज़ भी आपने क्लिक किए हैं वो क्या होता है गूगल इमेज सर्टेन मतलब आपका स्टोर हो जाता है आपके जो इमेज है या वीडियो है. Or you can also see the so many good features also like after certain time period they start giving you reminded that you click the photos 2 years or 3 years or 4 years back. So they start reminding you like you can just see all those data. तो ये बहुत ही मतलब इट इज़ अ easily access to all cloud by a मोबाइल यानी आप मोबाइल के थ्रू कहीं पे भी अपने क्लाउड में जो भी आपके डेटा है उसको ईजिली आप देख सकते हो. देन वी हैव अ सर्विस इन द पेपर यूज मॉडल. तो हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस to the user for access the service on the cloud and pay the charge as per usage of a service. Then we have an unlimited storage capacity. The cloud offers a huge amount of storing capacity for storing our important data such as document, image, audio, videos, and etc. in one place. Then we have a data security. Well, data security is one of the biggest advantage of the cloud computing. The cloud offers a many advantage features related to the security and ensure that the data is securely stored and handled. So now the type of clouds. So we have the 4 type of clouds. First is public cloud, private cloud, hybrid and community. Public cloud जो cloud that being used by the any person, any public any person like us or anywhere. जो हम अपने मोबाइल पे हम जो भी क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ पब्लिक. प्राइवेट क्लाउड हमारा जो IT कंपनीज वे यूजिंग द क्लाउड. हाइब्रिड क्या हो गया दोनों का मिक्सचर यानी पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सचर हो गया. देन कम्युनिटी क्लाउड क्या हो गया. कम्युनिटी क्लाउड में क्या है कि वी हैव बीन यूजिंग large of that being used basically in a like suppose that we have a hospital and that hospital is a
connected, so several branches. तो ये जो सिंगल जो ये जो क्लाउड मतलब हमारा हॉस्पिटल है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल ब्रांचेस ऑल्सो. तो ये एक दूसरे से इन अ फॉर्म ऑफ कम्युनिटी कनेक्टेड है. तो दिस इज एक्चुअली द उसमें जो क्लाउड हम यूज़ कर रहे हैं, दैट द ईच ऑफ एवरी ब्रांचेस द the data has been stored in a different location. That is actually a community cloud. Now the public cloud. So the public cloud is open to all to store and access the information via the internet using the paper usage method. In a public cloud, the computer is stored and managed and operated by the cloud service provider. Suppose we have examples like Amazon Elastic Compute Cloud, then IBM Spark Cloud, Enterprise, Microsoft, Google App Engine, Windows, Azure Service Platforms, etc. तो हमारा जो पब्लिक क्लाउड है, ये क्या है, ये ओपन टू ऑल है. एनी वन कैन जस्ट स्टोर एंड एक्सेस द इंफॉर्मेशन अगर उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर यूसेज मेथड. तो हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो यहाँ पर है, दैट इज बीन मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो हमारे पास एग्जांपल क्या क्या है, अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है, IBM स्मार्ट क्लाउड है, देन माइक्रोसॉफ्ट गूगल ऐप इंजन हमारा हो गया, विंडो अजूर सर्विस हो गया. तो दीज आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक क्लाउड. नाउ वी हैव अ प्राइवेट क्लाउड. सो प्राइवेट क्लाउड इज ऑल्सो नॉन एज अ इंटरनेट cloud or corporate cloud. It is used by organization to build and manage their own data center internally or by the third party. It can be deployed using a open source tools such as OpenStack and the Eucalyptus. तो हमारा प्राइवेट जो क्लाउड होता है, ये हमारा इंटरनेट का क्लाउड, इंटरनल क्लाउड होता है, ये जो कॉर्पोरेट यानी IT कंपनीज में यूज़ होता है. और ये बेसिकली वी आर यूजिंग इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हम बिल्ड और जो भी मैनेज, वो अपना खुद का मतलब डेटा दे वर बिल्डिंग एंड दे आर मैनेजिंग देयर ओन डेटा सेंटर इंटरनली या तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू. तो दे कैन डिप्लॉय यूजिंग बाय द ओपन सोर्स टूल और सच एज अ OpenStack or the Eucalyptus. Hybrid cloud. तो hybrid cloud is a combination of both public cloud and the private cloud. Hybrid cloud में हमारा it is a partially secure because of the service will be running on the public cloud can be accessed by anyone, while the service while are running on a private cloud can be accessed by the organization user. तो हमारा जो hybrid cloud है, ये partially secure है क्योंकि एक तरफ जो सर्विस है that can be running on the public cloud system, कोई भी इसको एक्सेस करता है. और एक तरफ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के जो यूजर्स हैं, दे वे गेटिंग द सर्विस, ठीक है, एंड दे ओनली कैन एक्सेस ऑल दोज डेटाज ऑन द प्राइवेट क्लाउड सिस्टम. तो हमारा क्या होगा, गूगल एप्लीकेशन सूट हो गया हमारा, जैसे कि जीमेल है वो गूगल ऐप हो गया, आपका गूगल ड्राइव हो गया, ऑफिस 365 हो गया जिसमें हमारा आता है MS ऑफिस आ गया, देन वी हैव Amazon वेब सर्विस हो गया. तो दीज आर द पार्ट ऑफ द हाइब्रिड क्लाउड. Now the community cloud. The community cloud allows systems and the service to accessible by a group or a several organization to share the information between the organization and the specific community. It is owned, managed and operated by the one or more organization in a community, a third party or a combination of them, such as a healthcare community cloud. तो हमारे community cloud में क्या होता है कि एक तरह का सर्विस देता है जो कि large group of several organization were connected to one another, ठीक है. It is owned, managed and operated by one or more organization in community और या तो third party और या तो combination of them. बेसिकली ये जो कम्युनिटी क्लाउड है, ये आप हेल्थ केयर कम्युनिटी क्लाउड हेल्थ केयर सिस्टम में जनरली आप देख सकते हो. इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड प्रोवाइडिंग द क्लाउड सिस्टम्स टू द
to the our healthcare system, या जो भी इसे यूज़ कर रहे हैं. At around in 1961, John McCarthy suggests in a speech at MIT that the computing can be sold like a utility, just like a water or electricity. But of course, time has passed and the technology caught the idea of after few years we mentioned that. In 1999, the Salesforce.com started delivering of applications to the user using a simple website. The application were delivered to the enterprise over the internet, and this way the dream of computers sold the utility were true. तो 1961 में जॉन मैकार्थी ने सजेस्ट किया कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इसे हम यूटिलिटी सिस्टम की तरह हमें यूज़ करना है, जैसे कि हम पानी और इलेक्ट्रिसिटी को बेचते हैं उस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए. तो ये टेक्नोलॉजी हैज़ बीन जो ये थॉट इज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाय द मिस्टर जॉन मैकार्थी. आगे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, अराउंड 1999 में Salesforce.com था, they were started delivering applications to the user using a simple website. इसमें क्या हो रहा था कि they were delivered to enterprise over the internet, and the way of computing has been sold and utility were true. Then in 2002, Amazon started Amazon Web Service, providing a service like storage, computations, and even human intelligence. However, only started while the launch of the Elastic Compute Cloud in 2000. Truly commercial service open to everybody existed. Then in 2009, Google app started, which provided cloud computing enterprises for the applications. And of course, all the big players are present in the cloud computing evolution, somewhere earlier, somewhere the later. In 2009, the Microsoft launched the Windows Azure, and companies like the Oracle and HP have all joined the game, and this provided today cloud compute had become the mainstream. The cloud service model, we have an infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Infrastructure as a service. The infrastructure is as a service, इसे हमें hardware as a service, and it is a computing infrastructure managed over the internet. Is a main advantage of using the infrastructure as a service is that it help user to avoid the cost and complexity of the purchasing and managing the physical server. तो हमारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है एक तरह का हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है. इट इज़ अ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ मैनेज ऑन द इंटरनेट. हमारा जो मेन एडवांटेज ऑफ है कि एक तरह का इट helps to use it to avoid the cost or complexity or purchasing and managing the physical server. हमारा एग्जाम्पल हो गया DigitalOcean, Linode, Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Computing Engineer, then Rackspace and Cisco. इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? The resources are available as a service. The services are highly scalable, dynamic and flexible. It provided GUI and API based access and automated administrative tasks. Platform as a service. The platform as a service is a cloud computing. A platform is created for the programmer to develop, test, run and manage the application. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हमें क्या हो रहा है, जो भी हमारे प्रोग्राम है उनको एक मतलब दे वर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपने एप्लीकेशंस को उनको डेवलप भी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, उनको मैनेज भी कर सकते हैं. जैसे हमारा AWS इलास्टिक बीनस्टॉल, विंडो अजूरे, देन हीरोकू, Force.com, गूगल ऐप इंजन हमारा हो गया अपाचे, देन हमारा हो गया स्ट्रेटोस, मैग्नेटोस, कॉमर्स क्लाउड एंड द ओपनशिफ्ट. हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. पहला है कि एक्सेसिबल टू द वेरियस यूजर बाय द सेम डेवलपिंग application. Then we have a integrated with a web service and a database. Then built on a virtualization technology, so the resource can easily be scaled up
or built as per the organization needed, support a multiple language and framework, provide an ability to auto scale. Now the software as a service. The software as a service on demand software. It is a software in which the application are hosted by cloud service provider. The user can access this application with the help of internet connection and web browser. तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है कि ये इट gives a software in which the application are hosted by cloud computer provider. The user can access these application अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है और वेब ब्राउजिंग है. तो हमारा सबसे गूगल ऐप हो गया जहाँ पे आप क्या जाके आराम से किसी भी तरह का एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यू कैन डाउनलोड एंड स्टार्ट यूजिंग. ठीक है. बिग कॉमर्स हो गया, मैं सेल्सफोर्स हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, जेंडेक्स हो गया, सिस्को हो गया, वेबएक्स हो गया, जेंडेक्स हो गया, स्लैक एंड गो टू मीटिंग हो गया. हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ software as a service है. दे managed from a central location. It is hosted on a remote server, accessible over the internet. Users are not responsible for the hardware and software update. Updates are applied automatically. The service are purchased on the pay-per-use basis. Now let's see the difference between the infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. The first one is the infrastructure as a service. It provides a virtual data center to store information and create a platform for app development, testing and deployment. तो वर्चुअल डेटा सेंटर प्रोवाइड कर रहा है. हम यहाँ पे डेटा को स्टोर और क्रिएट कर रहे हैं और अपने ऐप को डेवलप कर रहे हैं और उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, उसको डिप्लॉय भी कर रहे हैं. इन द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में इट ऑल्सो प्रोवाइड अ virtual platform जहाँ पे and it also provided a tools to create, test and deploy the apps. Then we have software as a service. यहाँ पे क्या है कि ये आपके जो अपने वेब सॉफ्टवेयर हो या एप्स है, यहाँ पे properly complete business task you can just get here. Then infrastructure as a service का second point है, it provide access to the resource such as a virtual machine, virtual storage system. Then platform as a service में it provide a runtime environment and deployment to the tool for the application. Then software as a service में क्या है, it provide a software as a service to the end user. Then जो हमारा infrastructure as a service का third point है, it used by internet network architecture. जहाँ तक कि हमारा platform as a service has been used by the developer और सॉफ्टवेयर जो सर्विस है दैट इज यूज्ड बाय द एंड यूजर. देन हमारा फोर्थ पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर तीनों प्रोवाइड कर रहे हैं. Now cloud characteristic. Resource pooling. Resource pooling is one of the essential feature of cloud computing. Resource pooling means the cloud service provider can share resource among the multiple clients and each providing a different set of service according to their need. Then the second one is on-demand self-service. It is one of the important essential feature of cloud computing that it enables a client to continuously monitor server uptime and capabilities and allocated network storage. Then the third one is easy maintenance. This is one of the best cloud features. The servers are easily maintained and the downtime is a minimal or sometimes a zero. Scalability and the rapid elasticity. A key feature of the advantage of the cloud computing is rapid and scalability. Then economical. The cloud computer helps to reduce the IT expenditures on the organization. Then we have measures and reporting services. So reporting services is one of the many cloud features that make it the best choice of the organization. Now we have a security. The data security is one of the best feature of cloud computing cloud service that make a copy of a stored data to prevent any kind of data loss. If one of the server lost data by any chance, the copied version is restored from the other server.
Then we have automation. Automation is essential feature of cloud computing. The ability of a cloud computing is automatically install, configure and maintain a cloud service. It is known as automation in a cloud computing. Resilience मतलब होता है, resilience मतलब in a cloud computing means the ability of service to quick recover from the disruption. Then large network access, a big part of a cloud characteristic, it's ubiquity. The client can access cloud data or transfer a data to the cloud from any location with a device and internet connection.